बहुत अजीब टाइम गुजरा था, लेकिन उस चीज़ में मैंने अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अपने बारे में मतलब लर्न की हैं. लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग मोर सॉन्ग्स जो कि मैं निकाल नहीं रहा. Why are you not releasing songs, bro? You're such a talented guy. You have a really nice voice too. Like, why are you not releasing songs? You know, the problem is that I really overthink. मेरी overthinking की आदत इतनी गंदी You have है. anxiety Yes. issues, Yes. depression. Yes. You're fighting anxiety and depression. Yes. Does anybody else in this room fight anxiety and depression? I do. What happens when you fight anxiety? Like, what happens? How do you feel? Dead. मतलब Okay. मैं मर जाती हूँ. हाँ मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ कि बस दुनिया रुक गई है. Yeah, it happens, I guess. हाँ, मैं जब तो मुझे बिल्कुल भी depression होता है ना, तो चुप. usually I come downstairs, I just sit somewhere alone. हाँ मैं ये चीज़ I बहुत don't करती talk to हूँ. people. I don't like someone asking me कि क्या हुआ है, because I don't know that what is happening. I feel. Sorry. I'm just cutting you. I feel anxious sometimes, but not to the level where I've seen some of my friends do. Like, there's a friend of mine, and whenever she's anxious, she starts like getting short of breath. Like when That's what happens to me. I know, and I've seen that in you. So yeah, and that's why I'm saying, because I have seen like the worst case of anxiety, and you know, a lot of people go through these issues and not even knowing what's happening to them. Yeah. So yeah, and that's like mental health is a हाँ, big मुझे issue. लगता है हर कोई फाइट तो करता है ये चीज़, लेकिन Not everybody. हाँ, Some ये people भी are है. stronger, Yeah. but like a lot of people still go through anxiety and depression. Yeah, Now depression, stress. even stress. अब depression भी कैसा है? You can have everything in life. You can have all the happinesses. Happinesses is not a word, but like mentally, you're just not happy. Like you're not there. Yeah, Like, you're for example, still like- finding that one thing that you think is gonna make peace in your life. I think it is that, because the end goal is that you have to look for peace. So Yeah. yeah, now I don't know how to explain depression or how to fix it, but I kind of go through it too. And I wouldn't say depression, but like anxiety, Yeah, mixture anxiety, of yeah. depression. I don't know what I feel like. I don't know exactly what to call it. But the problem with it is, with my problem is, whenever I'm not working, I just feel like my life is not worth it. Same. You know It's what the I- same you know what I case with mean? me. शाबिर पता है Like क्या I होता है feel इस like I'm चीज़ में? existing without a purpose, and that gives me like a mini heart attack every beating second. Like I feel like I shouldn't be here if you know I'm not working. And that's like a dangerous thought process in its own, because like you're fighting with your own head, saying that no, everything's going to be okay, everything's going to be okay. But लेकिन like हर at the end बंदे of का the मुझे day, लगता है इसी तरह एक पॉइंट होता है. जैसे तुम्हें ये होता है ना कि मैं काम नहीं कर रहा हूँगा तो मैं बस फंस जाऊँगा या मुझे बहुत वो होगा. मुझे लगता है हर बंदे का एक पॉइंट इसी तरह का होता है कि बस वो आपको पकड़ लेती है वो चीज़, और आप फिर उससे फाइट करते रहते हो अकेले दिमाग में या सबके सामने या सबके अकेले या जो भी. लेकिन बस हर बंदे का कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि बस आपको होता है कि ओ शिट यार, बस दुनिया पता नहीं अब क्या ही होगा, क्या हो गया, सब ख़त्म, बात है. रुक गई है दुनिया और सारी चीज़ें. yeah. पता है कैसे, मतलब डिप्रेशन में ऐसे होता है कि जब आपको डिप्रेशन फील होने लगता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ लाइक सराउंड देयर सेल्फ विद द क्लोज वंस. मतलब मेरे केस में ये था कि मुझे पहले नहीं होती थी. बैक इन 2016 मैं 3 महीने अकेला रहा था, और अचानक से एक दिन मुझे बहुत अजीब ख्यालात आने लग गए. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, मतलब क़यामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म. तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी शुरू हो चुकी है. अब मेरे केस में ये था कि अब जब मैं इधर था, आई स्टेड हियर फॉर लाइक 3 months. मैं हमेशा जब भी डिप्रेस या एंग्जियस होता था तो मैं यहाँ पे आ जाता था और तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड करता था. लेकिन अभी जो लॉकडाउन के वक्त मेरा टाइम गुजरा है, तो आई रिसेंटली चेंज माई हाउस, सो माई रूम इज़ लाइक ऑन द 2nd floor. तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ मेरा रूम है. तो शाबिर वहाँ पे ऐसा होता था कि मुझे पहले 4-5 दिन तो ऐसा फील होता था कि मुझे पता नहीं कोई चीज़ घेरा हुआ है. लाइक मुझे बंद फील होता था. लाइक एवरी मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप आई वाज लाइक नो, आई जस्ट वांट टू स्लीप अगेन. देयर वाज अ टाइम आई लिटरली स्लेप्ट फॉर 20 hours just because of depression. I did not wanted to get up. I was like, I'm done with this. I literally woke up after 20 hours and I was like, कौन सा दिन चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता था. क्योंकि जब आप अब मैं बताता हूँ. अब मैंने पिछले साल गाना निकाला था
और उसके बाद मैंने प्लान किया था कि मैं नए गाने निकालूंगा, मिलियन व्यूज़, एक मोटिवेशन आती है। लेकिन पता नहीं ज़िंदगी आपकी ना लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है, कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ होगी, वो आपकी पूरी मोटिवेशन को ना अंदर से पुल करती है, पुल करती है, वो आपकी पूरी मोटिवेशन डेड कर देती है। खत्म हो जाती नाउ लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक अब शावीर साहब जब मेरी चैट पे बात होती है, he always pushed me towards like making music. He's like, I'm gonna promote you, work hard, and बहुत motivation देता है। लेकिन और उस टाइम मैं पूरा pumped up हो जाता हूँ, I'm like yes, I'm gonna work on this, but as soon as I start recording something, there वो कुछ अंदर से ना चीज़ होती है, वो मार देती है पूरी motivation, कि दिल ही नहीं करता। And It's called the creative blockage. yeah. Yeah, I've read about that, and that's a serious problem, partner. And a lot of people actually don't know about this. When I Yeah, was gee, facing this, what do you mean it's with called the creative blockage. So what happens is, every part of your body wants to work. Every part of your body wants to create. Your mind is ready to go out there and make history. Like in my own head, sometimes I'm so creative, I'm thinking of ideas. But when I start working, like all my day, I would be thinking, I have to work, I have to work. I'm so excited to work. As soon as I start working, there's like a block. There's like a creative block. And it just doesn't let me work. It's called a creative blockage. And I read about that. And I realized that I'm not the only one who's going through these issues. Actually, in creative people, this is like the leading cause of dead creativity. Yeah. Because a lot of people who are very, very creative, have you ever not seen like the most creative people are sometimes lazy as F, where they're just in their bed like this and they're not doing That's much. totally And they're, and that's me too. I have to force myself out of bed. I have to force myself out to like the camera. And sometimes I'm excited for it. Sometimes I'm looking forward to it. But sometimes there's just like a creative blockage where I just can't help but to just sit and just like I'm hating myself for not working, but I लेकिन कुछ can't कर भी नहीं start सकते working. हैं। You know what I mean? And it's so confusing in my own head because I don't understand आपको it. लगता है आपके ऊपर कुछ चीज़ रखी हुई है, कोई हाँ। ईंट वजन। रखी हुई है कि आप उठ नहीं पाते। हाँ. और I मतलब want सामने मेरे माइक है, सामने मेरे कीबोर्ड है, I have I literally want everything. to, but I can't do वाली चीज़। Huh, I want to, but I can't do. Exactly. And it's a lot of like then you overcome all of that by talking a lot. "Okay, I'm gonna do this. I'm gonna do this, guys. I'm gonna come out with like the best song, guys. I'm gonna come out with the best video." You know, all of these talkers who talk a lot and don't do a lot, they're going through that because their ideas are big, but they can't get themselves to start working on their own goddamn ideas. ये बहुत होता है मेरे साथ। You know what I mean? हाँ, मुझे अब समझ आ गई। And I read about that, and a lot of people like Kevin Hart. I was listening to one of his books on Audible, and I was just like getting to know more about Kevin Hart and the personality. And he's like, I hate the talkers. I hate the people who say कि मैं ये कर हाँ, लूँगा, मैं मैं वो कर लूँगा, करो because बस। those are the people who never end up doing anything. लेकिन I think it is a mental illness. It's a mental disease where, dude, it's not that they don't want to do anything. They're talking about it because they want to do They it, don't- they but want they to do can't it. get energy to do it. And it's so difficult where you have to literally watch motivational videos. Sometimes I have to watch motivational videos to get Videos, myself out of the bed. Like I have like quotes all over my laptop, my desk, motivational. every motivational. I surround myself with people who are crazier than me because I know that if not for them, I wouldn't be picking up myself every single morning. Yeah. शावी I जब think मेरे you से have to talk yourself out of it Yeah. sometimes. मेरे से जब ये काम नहीं होता ना, मेरा होता है कि अगर मैं एक चीज़ की वजह से डिप्रेशन लेता हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। और जिसकी वजह से ना लाइक अगर मैं अभी सोचूं ना कि मैं गाना नहीं बना पा रहा, अगला मेरा रीज़न होगा कि आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट, लाइक आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोना टेल यू, और तुमने शायद नोटिस भी किया हो, मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत आ गई थी बोलो। इन 5-6 महीनों में। मुझे अटेंशन सीक करने की आदत पड़ गई थी। आई वॉज लिटरली बिकमिंग एन अटेंशन सीकर। मतलब अगर मैं जैसे अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, I'll see you guys doing like good stuff, roaming around, I'll feel bad, मैं इधर क्यों बैठा हुआ हूँ वगैरह, and then all sudden late night I'll text शावीर, hey call। मतलब मैं बहुत attention seek करने लग गया था और मैं खुद सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। like, I was tired of everything। मैं मतलब हर चीज़, मतलब जो गलत चीज़ है ना मेरे लिए, मैं वो करने लग गया था। Did you take help from drugs of any sort? No. I never used any sort of Like that is something that you just wouldn't. But like
there are bad drugs and there are good drugs. Yes. By drugs I mean दवाइयाँ. हाँ जी. Did you go to a doctor, psychiatrist, take medication for something like this? शाविर मैं मतलब उस पॉइंट पे आ चुका था लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मतलब मेरा ये होता था कि अगर पॉजिटिव साइड पे हूँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे दोस्त हैं. आई हैव गॉट अ ग्रेट सराउंडिंग. तो मैं उन लोग से ही बात करके अपना दिल को मतलब बेहतर कर लेता बेहतर करता था.